Hey guys, welcome back to this channel, Code Matrix YouTube channel, and I am your host, and today we will learn how to manage services using PowerShell, and we will start with the get service command on a local Windows machine, and then we will move to managing services in Azure. So as you can see here clearly, I have listed some basic command. Okay, so we are learning from the basics. Okay, the PowerShell, we are learning from the basics. That's why I have used some basic commands, and this is a proactively used in the organizations also in the in a day-to-day basis. So as you know that I have started as master PowerShell series on YouTube channel, and I have posted on LinkedIn also and my YouTube channel also. And if you find some helpful from that video, then hit a like, and let me know also if you have any queries. So we have just started the video, so let's start with this basic command. And you can see that this is the see all the services. First of all, I want to introduce some PowerShell related things. Okay, so let's move to the PowerShell. Here if you see PowerShell, so this is two types of PowerShell you can see. Okay, this is the PowerShell command CLI, and this is the PowerShell ISC. So you will ask what the difference between PowerShell and PowerShell's ISC. So if you ask me the questions, then let me answer this question. Okay, so this is a very big difference. Okay, in the PowerShell window you can what the advantage disadvantage you will see. So in the Windows PowerShell you can only execute the command only. Okay, you cannot you can't write a multiple line of code or scripts which you need to be execute the task. Okay, which you need to job done. So with the use of PowerShell, you can use the PowerShell to develop your scripts. Okay, this is called a development area. It's kind of a Visual Studio Code where you can write a script and execute the script also, prepare the script. But in the command line in the PowerShell, you can, this is the PowerShell, and here you can only write the command. You can't write here multiple line of codes. And this is also used for single command, and this is used for executing the scripts. Okay, but in the PowerShell ISC, this is the PowerShell ISC I have opened. You can write, this is a a script panel where you can write the design the scripts according to the requirement, according to the job done. Okay, anything you want to automate you can write here. And this is the command line. It's simple, same like a PowerShell. Here you can execute those scripts, or you can see the output of that scripts. Okay, so without any wasting time, let's move to the our first basic commands, which is very widely used, called a get service. Okay, so this commands list all the services on your local machine, and it's a quickly way to check the status of service and ensure everything is running smoothly. Okay, so to get started, the very first commandlet here is a simple simply see a list. Okay, so I'm trying to execute this service, get service. Okay, in the comment I have commented what I have written, see all services. So
इसको हम यूज़ करेंगे अभी कि आउटपुट सर्विसेज आउटपुट फेच करने के लिए. ओके, सो yeah, like select and click right in your mouse and run selection. If you see in the output section, आप देख सकते हो कि we get some output. Okay, we got some output. यहाँ पे देख सकते हो आप स्टाटस, नेम एंड डिस्प्ले नेम. ओके, गेट सर्विसेज मीन्स आप देख सकते हो लाइक स्टाटस, नेम एंड डिस्प्ले नेम. स्टाटस रन क्या, व्हाट द स्टाटस ऑफ द सर्विसेज, ये स्टॉप है, ये रन है. ओके, हम उसका नाम भी देख सकते हैं और डिस्प्ले नेम भी देख सकते हैं. एंड इफ़ यू नोटिस दैट नेम एंड डिस्प्ले नेम इज़ वेरी मच डिफरेंट. ओके, सो yes, so that is used for a get service. And once the output appear at the bottom section of the page. Okay, now while there are lot of entries here, what I want to point out are the 3 columns. This is status, name and display name. So let me just scroll back to the top, and we need to check, yeah, like status, of course, like which indicate whether it is running or stop. Okay, but more importantly it is the name and the display name. ये दोनों चीज़, ये और ये दोनों चीज़ बहुत important है. basically this name. Okay, so I am mentioning this because when you refer to this to the services in your commandlet, okay, you can use either the name or the display name, but the name is not always the intuitive, but it does have some advantage in that it is much shorter and there are no spaces. So ये एक easy होता है डेटा को, बिकॉज इसमें स्पेस नहीं है. ठीक है, जब हम मल्टीपल पैरामीटर्स ऐड करेंगे तो इसमें ये एक्चुअली नेम बहुत इम्पोर्टेंट लाइक रोल प्ले करता है. ओके, वी विल सी इन द फर्दर कमांड्स. सो आप देख सकते हो लाइक गेट सर्विसेज में आप सर्विसेज रियल टाइम सर्विसेज आप मॉनिटर कर सकते हो. और वन थिंग आई वांट टू शो यू, यहाँ पर आप टास्क बार क्लिक करो. इन दिस टास्क बार आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप्स, यूजर्स डिटेल्स एंड सर्विसेज. अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज में क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी हियर लॉट ऑफ सर्विसेज रनिंग. ओके, बैकग्राउंड में रन हो रहा है, बैकग्राउंड में स्टॉप्ड है, रन है. ओके, ये देखने को हमको मिल रहा है. ठीक है, then you will think that if we have a task manager, then why we are using PowerShell, right? Obviously. So इसमें क्या होता है ना, आप अगर टास्क बार में आप सर्विसेज में चेक करोगे, इसमें मल्टीपल रनिंग एंड स्टॉप्स दिखाएगा. बट द थिंग इज़ लाइक अ पर्टिकुलर इतने सारे सर्विसेज को आप इजीली ट्रैक नहीं कर सकते. ओके, इजीली ट्रैक नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं पावरशेल. हम देखेंगे फर्दर कमांड में, जो कि बहुत यूज़फुली यहाँ पर काम आता है एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड टू गेट द डिटेल ऑफ दैट सर्विसेज. ओके, now the second command, let's move to the second command, is filter result using characters. ठीक है, so in my next commandlet I am using the display name and then I am filtering so that I can just a few service back. And the general idea here is that I want to work with the print so like Spooler service, but perhaps I am not exactly certain what is the display name in nor I am like certain about its actual name. Okay, so
मुझे पता नहीं कि एक्चुअली उसमें डिस्प्ले नेम क्या है और इसमें क्या आने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, गेट सर्विस यूज़ करूँगा, देन हाइफन डिस्प्ले नेम, देन PR। मैं PR यूज़ क्यों कर रहा हूँ, ओके लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज़ द मीन ऑफ PR। हम पैरामीटर यहाँ पर ऐड किए हैं बिकॉज मुझे लेट से यहाँ पर डिस्प्ले नेम जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पर जितने इट्स शोइंग दैट रैंडमली ABCDEFG ऑल द थिंग्स, बट मुझे फेच करना है एक्चुअल डेटा, ठीक है। PR मीन्स PR रिलेटेड, लाइक आफ्टर PR के बाद जितने भी है, लेकिन PR आर मैंडेटरी। वर्ड जो वर्ड में ये जो है PR, ठीक है ना, ये जो वर्ड है, ये 2 वर्ड अगर PR हो गया देन जितने भी सर्विसेज रन हो रहे हैं PR रिलेटेड, इट विल गोइंग टू फेच दोज डिटेल्स सर्विसेज। ओके, let's run this, select first of all and right click and run। आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पर शो हो रहा है डिस्प्ले नेम में प्रोग्राम कंपैटिबिलिटी, प्रिंटर एग्जीक्यूशंस, प्रिंटर वर्कफ्लो, प्रिंटर स्पूलर, प्रॉब्लम रिपोर्ट, कंट्रोल पैनल सपोर्ट। सो ये PR रिलेटेड है, ठीक है। PR में इतने ही सर्विसेज हैं, डिस्प्ले नेम है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग दिस मच, ठीक है। So that's why actually we are like, you know, we are you know, providing some parameters, some characters, okay। so star मैंने इसलिए रिप्रेजेंट किया है ताकि द वर्ड PR के बाद जितने भी जो भी वर्ड्स होंगे उस सब को फेच करेगा, ओके। डिस्प्ले नेम पैरामीटर्स। So this is like you know, like the asterisk is this is called a asterisk, okay। So this is the asterisk is called a wildcard character. That means like any set of character, as long as it being with PR, it will fetch. Clear? Okay, cool। Next move to the next command, which is called as stop, start, suspend or restart a service। So use suspend service or restart suspend service to pause, resume। I have mentioned in the comment you know, mention किया कमेंट में, ताकि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम सर्विसेज में हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, सर्विसेज को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, राइट। So as you can see that, okay, so my next commandlet is I am starting and stopping the services। so in this case, stop services, then I specify the name parameter, and now I only need to pass in the word spooler, because I know that is the name now, okay। you can see here name, यहाँ पे name में आप देखो स्पूलर है, और यहाँ पर करंटली रन हो रहा है, ठीक है। अब ये डिस्प्ले नेम प्रिंट स्पूलर है, तो मैं क्या करूँगा, ये स्पूलर जो है ना, इसको मैं स्टॉप करूँगा, ओके। या लाइक लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्मॉल कमांड। यू कैन परफॉर्म द सेम टास्क विथ n नंबर ऑफ सर्विसेज, लाइक आपको जो सर्विसेज आपको स्टॉप करना है, जो सर्विस आपको स्टार्ट करना है, आप यू नो सर्वर में जाने के बाद आप उसको लाइक स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग दिस एज एग्जांपल, एंड ये करंटली रनिंग हो रहा है। मैं इसको क्या करूँगा, इसको स्टॉप करूँगा। तो लेट एग्जीक्यूट, राइट क्लिक एंड सी, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से उसको ऊपर वाला कमांड को मैं रन करता हूँ। आई विल चेक, सी कूल, ये स्पूलर स्टॉप हो गया, ये सर्विस स्टॉप हो गया फ़िलहाल के लिए, ओके। ये सर्विस स्टॉप हो गया फ़िलहाल के लिए। नाउ लाइक यू नो, now this
पैरामीटर स्टार्ट, स्टॉप, सस्पेंड, रिस्टार्ट जो सर्विसेज के साथ हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे. वाई, ओके, किस काम के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है. लेट्स सी द एग्जांपल. सो स्टॉप वर्ड एक्चुअली यूज़ होता है तब जब when we need to temporarily halt or pause a service, or typically for maintenance or troubleshoot the particular server or applications related जो होता है ना, like yeah. Start service when you want to initiate a service that has been stopped or paused. ठीक है, तो जो सर्विसेज ऑलरेडी स्टॉप्ड है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये सर्विस स्टॉप्ड है. स्पूलर जो मैं अभी के जो जस्ट राइट नाउ आई हैव स्टॉप्ड दिस सर्विस, उसको स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट ये सर्विस यूज़ करूँगा, मीन्स ये कमांड यूज़ करूँगा. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस कमांड नाउ, रन दिस सिलेक्शन एंड अब मैं ऊपर वाला कमांड जो है उसको फिर से रन करूँगा एंड यू विल सी दैट ये सर्विस रन होना चालू हो गया. ठीक है, तो ये क्यों यूज़ होता है ये सर्विस, जब आप सर्वर में जाओगे, आप अगर लाइक आपका सर्विस अगर वो स्टॉप्ड है, अगर पॉज्ड है, ओके, एंड कॉजिंग एप्लीकेशन एरर और सर्वर एरर. ठीक है, तो इसमें आप लाइक उसको देख सकते हो वो सर्विसेज को, देन उस पर स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो लाइक दैट. एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस सस्पेंड ऑल्सो. okay, in some case you if you might like want to pause the service temporarily without stopping it completely. This is useful when you need to perform tasks that require the service to temporarily inactive, okay, but you want to resume its operation later without restarting it. So at that point of time you can like restart आप कर सकते हो that services automatically, particular like time period जो temporarily आप उसको pause करना चाहते हो, then later on आप उसको automatically run करना चाहते हो, then you can do with this, okay, with these operations. So the next is actually restart. So when a service encounter issues or need to be refreshed, restarting it can often resolve the problem without requiring a full stop and a start cycle. ठीक है, आप वो सर्विसेज को आप विदाउट स्टॉप नहीं करके आप क्या कर सकते हो, तो रिस्टार्ट कर सकते हो. ऑब्वियसली रियल टाइम ऐसे होता है, जब भी एप्लीकेशन रिलेटेड अगर कुछ भी होता है सर्वर में, तो एक्चुअली जनरली हम लोग चेक करते हैं द सर्विसेज जो कुछ जो है उसको मिटिगेट करते हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं उसको सम सर्विसेज नीड टू बी रिस्टार्टेड, मीन्स उसको रिस्टार्ट करना ज़रूरी रहता है. ओके, अगर ज़रूरी भी नहीं रहता है तो एप्लीकेशन अगर रन भी नहीं हो रहा है तो सम सर्विसेज जो है उसको रिस्टार्ट करते हैं. तो क्या करता है वो एप्लीकेशन वर्किंग बैक टू स्टेट. ओके, so this is the general command you can use in your local system. You can like proactively you can use this for practice also. The next command I am using is to retrieve a list of service based on their status. Okay, so we can use either a running or stopped as the value here value, and that we are looking for. Now this require the use of piping. So our first commandlet is to get service, okay, which is to retrieve a list of all services, but we know that will simply return every services no matter what. So then we pipe that into a where object. This is a where object which I have used statement. This allow us to create a filter, so where each object has a status like equal to running. So मैंने यहाँ पर multiple parameters, multiple
अगर आपको लाइक एग्जीक्यूट करना है तो आप इसको पाइप के थ्रू से पाइपिंग के थ्रू से आप उसको कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, बिकॉज समटाइम्स वी नीड टू run a series of command with the use of piping because of हमको filter like एक particular result चाहिए, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं गेट सर्विस यूज़ किया हूँ टू लिस्ट ऑल द सर्विसेज रनिंग. ओके, गॉट इट. एंड वेयर ऑब्जेक्ट मैंने ये पे यूज़ किया है, ठीक है. वेयर ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट मैंने यूज़ किया है. And this is a like a this is a condition. Okay. अब जब वेयर ऑब्जेक्ट यूज़ करोगे, ठीक है, वेयर ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट अब यूज़ करोगे, अब उसको कंडीशन उसको देना होता है. तो कंडीशन हम लोग कर्ली ब्रेसेस में हम लोग उसको मेंशन करते हैं, और यू कैन कॉल ए कर्ली ब्रैकेट. तो कर्ली ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे डॉलर अंडरस्कोर डॉट स्टार्टर्स हाइफन EQ रनिंग. सो डॉलर रिप्रेजेंट टू गेट सर्विस ऑल द सर्विसेज. ओके, एंड डॉट स्टाटस मीन्स लाइक दिस इज़ द स्टाटस. आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे तरफ जो है स्टाटस में हम लोग रनिंग स्टॉप जितना भी है वो चेक करेगा. इक्वल टू मैंने मेंशन किया है क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर स्टेट में मुझे डेटा चाहिए, सो मैंने इक्वल टू यूज़ किया. इक्वल टू यूज़ करके मैं यहाँ पे डबल कोड के अंदर रनिंग. तो मेरे को आउटपुट में ओनली रनिंग सर्विसेज चाहिए, ठीक है, मुझे सब सर्विसेज नहीं चाहिए. सो मैंने रनिंग सर्विसेज मुझे चाहिए, तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. लेट मी एग्जीक्यूट दिस कमांड. यू कैन सी हियर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मुझे रनिंग सर्विसेज मुझे लिस्टेड हो गया, ठीक है. मैं आप यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट लिस्ट कर सकता हूँ. दैट्स वाई वी कैन यू कैन यूज़ दिस कमांड टू शॉर्ट लिस्ट द थिंग्स. ओके, जैसे मैंने सर्विसेज को शॉर्ट लिस्ट किया यहाँ पे, और ये रनिंग सर्विसेज मैंने आउटपुट में ऑर्डर किया तो मुझे रनिंग सर्विसेज मिल गया. ओनली रनिंग सर्विस आउटपुट में मुझे शो कर रहा है. नाउ मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अभी इसमें स्टॉप यहाँ पे मेंशन कर दिया. नाउ यू रन, select, right click and run selection. See the magic of the command. अभी मुझे वो सर्विसेज मुझे आउटपुट में शो कर रहा है जो सर्विसेज स्टॉप्ड है, करंटली स्टॉप्ड है, ठीक है. दैट्स वाई दिस इज़ द एडवांटेज यूजिंग अ पावर शेल. ओके, और कमांड शेल. ओके, कमांड लाइन. एंड if you see the GUI यहाँ पर मिक्स्ड है, ठीक है ना. यहाँ आपको शॉर्ट लिस्ट का ऑप्शन नहीं देगा. आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, लाइक बिकॉज n नंबर ऑफ सर्विसेज इट इज़ इन रनिंग एंड स्टेट एंड द स्टॉप स्टेट. सो पूरा मिक्स है यहाँ पे. तो मैंने क्या किया यहाँ पे, विद द यूज़ ऑफ कमांड लेट मैं यहाँ पे सेपरेट कर दिया, ठीक है, ग्रुप कर दिया. एंड आपको तो दिखाया लाइक कैसे नेम के बेसिस में भी आप उसको फेच कर सकते हो डेटा. दिस इज़ द डेटा, दिस इज़ द कमांड विद द यूज़ ऑफ पर्टिकुलर नेम. पर्टिकुलर सर्विसेज में पर्टिकुलर सर्विसेज को आप फेच कर सकते हो, राइट. यस, सो दैट इज़ द यूज़ केसेस ऑफ दिस कमांड. Yes, so please try to execute this command on your local system. Okay, मैंने जो मेंशन किया है इसको ट्राई करना अपना लोकल सिस्टम में मेंशन करने ट्राई करने के लिए, बिकॉज ये प्रोएक्टिवली यूज़ होता है. एंड दिस इज़ द वेरी बेसिक कमांड आई हैव यूज्ड हियर. एंड later we will see in advanced level also, in the advanced level. Okay, एडवांस लेवल हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं. सो
So let's move to the next command, which is a get service hyphen name LanmanServer. So generally it is used to see the services with dependencies. Okay, I have mentioned some parameters like use required services or dependent services. Okay, so it tells us that this services is dependent on the like whatever you will see in the output, like net logon service or DFS namespace service. So which are both running. Okay, so there should not be any issue. So let's change it to the required service. Okay, मैं यहाँ पर क्या करूँगा? Okay, dependent service. Okay, required service. Okay, let's run this command. आप देख सकते हो यहाँ पे security account manager and server SMB2 X driver. Okay, so यहाँ पे we see that services on which the server service depends. Okay, so this is the services. So as you can see that LanmanServer service depend on several other services. So if any of these services are not running, okay, then the LanmanServer service might fail to start. It is important to ensure that all required services are up and running. Okay, so this is the thing. So get services hyphen name LanmanServer. So LanMan is like it's kind of a server service in a Windows operating system. So it provides the network services that allow a computer to share its resources such as a file and printer with other computer on the network. Okay, so file and printer sharing, network communication are related actually. Okay, so when the LanmanServer service is running, it listening from incoming network request on the specific ports, right? So like that हम देख सकते हैं, हम ये इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और किस सर्विसेज और किस सर्वर डिपेंडेंसीज हम चेक कर सकते हैं, लेकिन सर्विस विथ इट्स डिपेंडेंसीज. ठीक है, पर्टिकुलर सर्विसेज का हम डिपेंडेंसीज भी चेक कर सकते हैं वेदर इट इज़ रनिंग और नॉट रनिंग. ओके, अगर रनिंग नहीं हो रहा है तो वो एरर आएगा. ओके, so this is the particular commands you can try. This is the very important like commands also, so you can try in your own local system. Okay, and also we have started our latest PowerShell batch, and you can see the video, two video I have posted, and I have clearly mentioned that in detail of the PowerShell, and I will try to post more on this. So हम actually PowerShell में beginner to advanced level तक जाएंगे. And one more thing I want to list here. So इसमें actually मैंने क्या करूँगा, मैं Azure cloud को कैसे हम like manage कर सकते हैं with the use of PowerShell. We will see in the later part. Okay, so again thank you, and these are the some basic management tasks. So once again you can refer to the documentation site and that I showed at the beginning to find out a little bit more. But when it comes to the working with your services in PowerShell, you certainly can perform some very easy commands, but you can also create more complex commandlets that will filter out only the desired services, which can then all be affected with a single commandlet with the use of piping. Okay,
so which can save you a lot of time when you do need to work with multiple services at the same time. So yeah, thank you for joining. Bye bye.